Diljit Dosanjh, Neeru Bajwa, it is a pleasure to be here with you in London. How are you both? Fantastic. Very good, fantastic. Yes, that's the word. And we're fantastic. matching today. You are matching. Firstly, congratulations on the response you've got to the trailer. Neeru, I'm going to start with you. Okay. Because it's your return. This is your return to the franchise. This is my return to the franchise. Yes. Yes. Where were you for Sardarji 2? Boss. Oh. Hey? Yeah, producer. You had a baby. My No. producer's telling me to say that. I didn't have a baby then. Oh. I wasn't pregnant then. This interview gets juicy from the start. Where were you? Because I was pregnant at the time of release of Sardarji 1. So you can do a separate interview with Sunny Ji after this, okay? Okay. And the director of Sardarji 1 and 2. So, Okay, yeah, fine. we should ask them. But you're in Sardarji 3. Is this a continuation from Sardarji 2 or is it a completely fresh plot altogether? मैं कह सकता हूँ कि ये पहली जो सरदार जी थी उसका आगे थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है बिल्कुल. पहले मैं इनको पकड़ रहा था, हम अब मिलके किसी और को पकड़ रहे हैं. पाजी, आप मुझे जवाब हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है अंग्रेजी भी आपकी बहुत कैंट हो चुकी है. ये 100%. पिछले एक साल मैं में- एम्बैरस नहीं करना चाहता. मैं भी वो देखा इंटरव्यू में. हाँ, हम सब ने वो इंटरव्यू देखा है. और मेरे बॉसेस ने मुझे खास तौर पे ये कहा था यहाँ पे आने से पहले कि तुमने तो सालों भर हमसे झूठ बोला है. तुमने सालों भर हमसे झूठ बोला है कि अगर तुम दिलजीत का इंटरव्यू लोगे तो वो तो सिर्फ हिंदी या पंजाबी में जवाब देगा. अब देखो ये क्या कर रहा है, वहाँ जाके अंग्रेजी में बात कर रहा है. थोड़ी बहुत तो मुझे आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी. मेरा सुबह उठ के प्रिपेयर होना चाहिए था इस चीज़ के लिए. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टुडे. आई एम जस्ट मैं आज आपसे मिल रहा हूँ लाइक एक फ्रेंड, एक बडी, क्योंकि यू नो आई रिस्पेक्ट यू. जो आप काम करते हैं, जैसा आप ट्रू अपने दिल से काम करते हैं, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ. इसीलिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं. तो मैं वो उस माइंडसेट से नहीं आया आज, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा. Thank you. ले लो बिल इंग्लिश, क्योंकि नीरू जी साथ बैठे हैं तो शी कैन करेक्ट मी. दिलजीत, जब आप एक फिल्म को ऐसे रिविजिट करते हैं या एक फ्रेंचाइज को रिविजिट करते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज द रिकॉल वैल्यू फॉर द ऑडियंस, लेकिन एक खतरा भी होता है कि आप उतनी अच्छी फिल्म बना नहीं पाएंगे जितनी पहली थी. तो ये आपने कैसे असेस किया था कि ये वक्त सही है, ये कहानी सही है, ये टीम सही है ये फिल्म बनाने के लिए? देखो, लोग तो जज करेंगे आपको. वो तो मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं हम कोई फिल्म बनाएं तो वो जज नहीं करेंगे. मैं और नीरू जी कोई भी फिल्म करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं जट एंड जूलियट 1 अच्छी थी. तो उनके लिए तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी होगी. किसी को 2 पसंद है, किसी को 1 पसंद है. तो ये ऐसा मैं नहीं सोचता. कहानी अच्छी होती है और आजकल सीक्वल्स चल रहे हैं और प्रोड्यूसर्स ये चाहते हैं कि जो पहले अच्छी फिल्म चली है तो ये करते हैं. मैं कुछ फिल्में करता हूँ जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अलग करने को मिलेगा, और कुछ फिल्में मैं करता हूँ कि जो कमर्शियली भी प्रोड्यूसर्स को भी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं मेरे साथ बहुत देर से. इवन जट एंड जूलियट 1 से हम एक साथ काम कर रहे हैं सनी पाजी के साथ. तब तो वो प्रोड्यूसर भी नहीं थे, लाइन प्रोड्यूसर थे. उसके बाद वो हमारे प्रोड्यूसर्स के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रोड्यूसर बना लो. तो इन्होंने पैसे लगाए थे फर्स्ट फिल्म पे. यस. तो तब वो बोले थे कि हम मुझे ले लो प्रोड्यूसर, तो फिल्म मैं आपको दे देता हूँ रील्स. इनके पास ये दे नहीं रहे थे जट एंड जूलियट 1 की रील्स. ऐसे था ना? हाँ. तो ये ऐसे प्रोड्यूस तब से मेरे साथ हैं. तो कुछ फिल्में मैं ऐसे भी करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ इतनी देर से काम कर रहे हैं, तो अगर सक्सेस होती है फिल्में कमर्शियली तो इसमें बुरा क्या है. और लोग आके, मैं खुद बहुत ऐसी फिल्मों का फ़ैन हूँ जो आपको हंसाती हैं, खुशी देती हैं. ये सबसे बड़ी चीज़ है. बहुत सारी, मैं गोविंदा जी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ. फेवरेट कौन सी है? सारी फिल्में, मतलब कोई भी फिल्म उठा लो. एक वो कौन सी फिल्म है जिसमें कादर खान जी और उनका ढाबा होता है आगे, दूल्हे राजा राइट. सो मुझे लगता है वैसी फिल्में अब बनना बंद हो गई हैं. मैं तो फ़ैन हूँ ऐसी फिल्मों का. तो अगर कुछ ऐसा कभी भी मुझे करने को मिलता है, चाहे वो बॉलीवुड में हो या पंजाबी में. मैंने गुड न्यूज़ भी की है और चमकीला भी की है. गुड न्यूज़ आउट एंड आउट कॉमेडी थी, एक था उसमें कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉमेडी फिल्म थी वो. तो मैं दोनों तरह की फिल्में करना चाहता हूँ. बिकॉज हमारी लास्ट फिल्म ने 100 करोड़ किया था, जट एंड जूलियट 3 ने. तो ये भी सरदार जी 3 है, और ये प्रोड्यूसर्स हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं. तो कुछ फिल्में कमर्शियल करते हैं और कुछ फिल्में जो है वो कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, जैसे कोई सीरियस सब्जेक्ट हो, उस पर काम करते हैं. लाइक हमने की एक जसवंत सिंह खालड़ा फिल्म की है, तो वो अभी आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी लोग सबको पसंद आएगी वो भी. This film is, I told you before we began the interview, and I'm going to say it on record as well. I was
so impressed by the trailer, partly for the content of the film and partly for the courage that you've shown with releasing the film. Both of you have stood by this film, and I'm impressed by the fact that you have released this internationally in the manner that you set out to make it. Were you involved with that process of deciding that the film was going to be released as it is? No, जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था. मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था. उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं. तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं. तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं. तो ठीक है, फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो. तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था. तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज़ करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ. How was it working with Hania Amir? I mean, she's in the trailer. We know she's in the movie. She was at your London show as well. I remember meeting her around that time, and we were talking about how much she loves your work. You know, she's a huge admirer of your work, and there are a lot of people who want to know around the world. How was your experience working with her? Very good. She's very professional. और जब हम काम कर रहे थे तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं और नीरू जी, हमें लोगों को देख के लगता है कि हमारी जो जैसी इक्वेशन होती है फिल्म में, कि हम शायद पता नहीं बहुत कितने बड़ी वो टाइप्स हमारा रिलेशन होगा. डिनर पे जाने और पार्टी कर दें. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो उनके काम की, और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ हर किसी की प्राइवेसी की. मैं खुद भी बहुत प्राइवेट हूँ, और मैं हर किसी की को स्पेस देता हूँ कि वो, और ख़ास करके लड़कियों को, कि यार उनको तो थोड़ा और स्पेस देना चाहिए, कि मतलब, तो ऐसा फिल्मों में वो मेरा कैरेक्टर हो रहा है, वैसा मैं हूँ नहीं. तो अदरवाइज तो मैं बहुत, मतलब टू द पॉइंट ही हमारी बात होती है ज़्यादा कुछ. I think that is the magic to your chemistry. क्योंकि अगर आप देखें तो आपने 7 फिल्में की हैं इकट्ठी. ये इस फिल्म को इंक्लूड करके you've done 7 films together as a lead couple. That's the same number of films as a Shah Rukh Khan and Kajol. It's the exact same number of films that they've done together. Wow. I'm not saying you're Shah Rukh Khan and Kajol. It's okay. There's a different. You're Diljit and Neeru. It's different. Wow. The reason that they were cast 7 times is because the audience connect with their chemistry on screen. Likewise, the reason you're cast so many times is because the audience connect with your chemistry. But I think the secret to good chemistry is not being the best of friends. Would you agree? The respect is always there. He knows a lot about me, honestly. I know a lot about him, but it's not that, you know, we're like, oh, let's meet up for a coffee and stuff. I don't know, but it's a very peculiar and beautiful relationship that we have. When we meet, it's like, I don't know, we haven't seen each other for years, but it's like, oh, we just pick up from where we left off. And I think that's a beautiful relationship that we have. I think a lot of people think that this is some sort of like overnight wonder. Yeah. This man, this figure here, it's like an overnight pop out of thin air. He's just become what he is. Mm-hmm. But it's not that. As somebody who's seen him grow over 15 years, did you ever wonder in between if this man had changed completely from the way you knew him? No, he's honestly been the same from day one to now. His personality, the way he is with people, very respectful, very humble. And why shouldn't he be to himself? I think that's a fabulous way to go out in life. I am to myself. I don't have any friends in the industry. You just kind of put those, you know, blinders on and you go for it. And why shouldn't he? So, you know, it works for him. That's what makes him happy. And he's in his own world, and why does anyone care about? Like, let him live his life the way he wants. I agree with you. Right? I agree. Everybody has something to say about everything, and it's like even with me. Like I get you know, stop now. You're a mom. Stop. Let everybody do their thing, and just, you know. And if you don't want to watch it, just go away. I think you are definitely the perfect example of a dignified, classy Punjabi actress. Thank you. I think you are very much the epitome of grace and elegance. Thank You carry yourself very well, Neeru, and I've seen that over the years. But particularly when thinking about this interview and I was looking back, you've been like that since the very start. Thank you. I think one thing that I'm very happy about is that I've never lost myself. I think who I am, I have retained from the beginning.
And because it's very easy, I think, to get lost in this world and become somebody else, completely foreign to who you are. And I think my beliefs and my integrity are still intact today. So yeah. दिलजीत नीरू बदली हैं पिछले 15 सालों में? सेम ना देखने में बदली है ना देखने में तो I think you're looking even better than ever same, before. 100%. Yeah. तो मैं तो इनको फॉलो करता हूँ जब तक ये काम करते रहेंगे मैं करता रहूँगा I think that's a good way to be. लेकिन मैं सनी देओल ਨੂੰ follow कर रही हूँ ਜਦੋਂ तक वो काम कर रही हूँ मैं भी कर in my 60s now. But you've also changed that as well, right? Like when you started acting, firstly, I don't think there were any Punjabi actresses who were known on the like first name level that you are, right? I think you were the first to be of Punjabi cinema who is well known across the world from your industry. But also, you've said yourself, people said your career's over. After this film, there's no point trying. You got married, you had kids. People thought it was over for you. So you've already broken the glass ceiling. I think that's a blueprint that just, I think for a lot of women, we grow up thinking that we have to get married by a certain age, we have to have a career by a certain age, and then we're done. And then especially with actresses, there's an expiry date, and a very short date for us. Is it an outdated concept now? Or is it still real? There still is ageism. But I mean, I think once you break that in your own mind, that barrier, which I also had, that I was done and I said goodbye to him in Sardar G1. I said, No. I'm getting married now and take care and this is it for me. Because that was, I was movie with my conditioned. sister. Yeah, I asked him, I'm like, will you do as a movie with my sister? So it's like you condition yourself because this is how we've grown up and this is all we know. And then I think once I broke that mindset or the barriers myself, I don't know, just things just opened up. Things are changing, but it needs a man like Diljit Dosanjh to empower an actress like yourself. I think it speaks volumes that Diljit, you're still choosing to work with Neeru because you don't have to work with Neeru. Neeru has to travel across the other side of the world to come and work with you. There are actresses who are also popular in Punjab, who are younger than Neeru as well, who might have more of a social media presence than Neeru even. You choosing to still work with her, it is a huge credit to you. Neeruji, I think Neeruji is lucky for me. My first stadium concert, Neeruji was there. My first film shot, Neeruji was there. My first solo hit film, Neeruji was there. So I think she's lucky for me. Do you remember the respect with which she treated you when you first went on set? Because I think that counts for a lot. When it comes, 15 years later, you see how big Diljit is now. But you always remember the way your seniors treat you when you first go into a new environment. Do you remember how Neeru treated you? Yeah, मतलब like मैं इधर सोचा नहीं सी कदे कि मैं उन्होंने देखूँगा लाइफ च मैं इधर सोचा नहीं सी कदे मेरा सिंगिंग करियर वधिया चलता पिया सी सो जस्ट एक दिन मैंने कॉल आया कि यू वांट टू डू दिस सीन मैं कहा या 100% कौन है मूवी ओके 100% कौन है कहते नीरू बाजवा जिमी शेरगल ओके लेट्स वॉच नीरू बाजवा सो मैं तो सिर्फ इन्हां नूं देखण ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਜਾਣੇ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨੀਰੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਡੇ ਕਨਸਰਟ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸੋ ਬਸ ਜਸਟ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ Diljit is one of several generations of actors you've worked with. People ask you in the last few years, how is it working with Diljit Dosanjh? Or what do you think of his, huge stardom? What do you think of everything that's happening? But the truth is, you've worked with huge stars throughout your career. Harbhajan Mann, Gurdas Mann, Jimmy Shergill. Diljit is a humble enough man to know that they are very big stars 100%. and they are, hugely influential themselves. Throughout this change of generations of actors that have come, though, what does set Diljit apart? His passion, his hard work. I mean, he lives, breathes, his work, that's it. And there's no one as professional and hardworking as him. So if anyone says that he's lucky, it's not luck. Just spend a day with him, see how hard he works. And this new generation has not
gotten that yet. So because I work with him, you know, I'm working with younger heroes, and I wish I could just explain to them that no, it's the hard work you have to put in. Neeru, do you enjoy doing films like Sardarji? And I ask you that because you've done a lot of social dramas as well. You've done a lot of films that tackle a lot of issues. I mentioned the TV show that you did a moment ago as well. You do things that have something to say. And then you do a Jet and Juliet 3, or you do a Shutout, or you do a Sardarji 3. You do something that's pure entertainment. I love that too. I Really? think just like he said, and I think I'm very blessed to have the opportunity to do both, because I think there's very few actors that can, I think, handle both. You know, a typically commercial film, and then you go ahead and do a social drama. So I do enjoy both. I don't want to do one thing continuously. It's not, and I love being glamorous. I love doing songs. With comedy, it's hard sometimes to gauge if a universal audience will connect with it in the same way they might with a social drama. When I sign a film, it's gut feeling. I go with it, and then when I'm actually in the scene, like with him, I don't have to think. Everything that we do is organic. We never rehearse, and it just kind of flows. We never talk or discuss, we're gonna do this, hey, I'm gonna go here. It's like a tennis match. We're there to like catch what the other's throwing at us, and we react to each other, which I find very natural, and I think that's what the audience really enjoys, and they feel like it's authentic, like we're not being fake with each other. Even now, your chemistry with one another as co-stars is authentic. It's real. There's a respect, a warmth, a calmness that the two of you have even. And you feel safe. I mean, it's like when you have a co-star, you're working with him, you're actually surrendering yourself to that person. So to be able to feel like, okay, yes, I can fully surrender to my co-star, your performance can go anywhere. Otherwise, we're like, oh God, now he's gonna do this. Let me see how am I gonna handle myself. But with when you completely trust your co-star, it's different altogether. Diljit, 5 years ago, you were kind enough to use my voice in your intro for Goat. Yeah. And the thing that you used was me talking about all your accolades up until that point. Thank First Punjabi artist to do this, first Punjabi artist to do that, Wembley Arena, Madame Tussauds, XYZ. That feels so small now compared to what's happened in the last 5 years. You are the first Punjabi artist to perform at Coachella, the first Punjabi artist to appear on the Jimmy Fallon show, the first Punjabi artist to attend the Met Gala. ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप next intro पे use कर सकें वो 3 लाइनें. But how does it feel like hearing that back? It's like मुझे लगता है जो हो गया वो तो हो गया. मतलब ये होना ही था, ये हो गया. अब मैं तो इनके बारे में नहीं सोच रहा. वो थैंक यू आपने तभी अलाउ किया पाजी, और थैंक यू बीबीसी का भी, उन्होंने अलाउ किया कि क्योंकि आपने इन्हीं के चैनल पे बोला था और इन्होंने अलाउ किया. बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. वो गाने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज़ वहाँ से शुरू हो रहा था और वो इंट्रो बहुत अच्छी थी. लेकिन मैं कभी भी ऐसा जो हो रहा है चीज़ें वो होती जा रही हैं, वो पीछे जाती जा रही हैं. मैं अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं वो जो शायद मैं नहीं बोल सकता, वो अभी शायद बिलीवेबल भी नहीं होंगी. तो लेट्स सी, जब वो होंगी तब उसके बारे में फिर बात करेंगे. I think you really downplay the significance and impact. For example, Neeru's daughter is growing up in Canada. She stayed up late at night to watch Jimmy Fallon so she could talk to her friends about it the next day and be proud of being Punjabi. Do you know what that means for people living abroad, for children growing up abroad who have never seen themselves represented on screen like that? That's why he's moving forward, because he doesn't get stuck in his achievements. So that's when ego comes in place. He's just like, okay, done, I'm going to keep going forward. And that's why I feel like it's his biggest quality. You'll see, I'm sure you've met so many stars and they're so like, oh, I did this. They're still living in yesterday or their last hit. But you know the problem when you don't appreciate those moments is people are very quick to not give you the credit you deserve. And in this case, and I'm not giving him fake credit, you know, this is something that is really major. There was no turban-wearing man headlining Coachella. There was no Punjabi artist on Jimmy Fallon. These are really big moments. So when you saw, for example, all those tweets of people saying, we finally feel represented, how did that make you feel? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नीरू जी के बेटी हैं और जो हमारे यंग जो अभी टैलेंट आएगा, वो काम करेगा, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे लोग. मतलब ये सब चीज़ें तो भूल जाएंगे लोग. मुझे लगता है कि अभी जो हमारा आगे जो टैलेंट आने वाला है
तो वो ये सब चीज़ें ख़त्म कर देगा। ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है 4-5 साल में ये ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बार तो चलो डोर किसी को तोड़ना है वो अलग बात है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले कभी हुई नहीं है। 100% ये अगर आप इसको ऐसे देखें कि पंजाबी इट्स लाइक रीजनल लैंग्वेज, रीजनल म्यूज़िक, इट्स नॉट अ नेशनल म्यूज़िक इन इंडिया, इट्स रीजनल। पंजाब से एक छोटी जगह से, एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ से जो है वो इतना म्यूज़िक आ रहा है, इतना टैलेंट आ रहा है। मैं अभी फिल्म कर रहा था, उसमें एक होस्ट आ रहा है मेरे, वो बोल रहे थे यही बात, कहते हैं यार कैसी जगह है पंजाब, कितना कुछ होता है पंजाब के साथ, कितनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं पंजाब के साथ, स्टिल वहाँ से कितना टैलेंट निकल रहा है, कितना म्यूज़िक निकल रहा है, कितना आर्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड स्टेज पे आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। शायद पंजाब ब्लेस्ड है और पंजाब को फिर नज़र भी जल्दी लग जाती है। 100% जो चीज़ खूबसूरत होती है उसको नज़र भी लगती है। तो जो मुझे लगता है हमारे आने वाला टैलेंट है वो ये सब चीज़ें बहुत छोटी कर देगा। When you perform at a Coachella, you choose to perform folk music. You didn't perform Lover at Coachella. If you, I don't remember. शायद गाया था मैंने Or Lover, Jimmy Fallon. You didn't do. हाँ ना Jimmy Fallon में नहीं गाया। You did Go and Born to Shine, Yeah, right? yeah. So you specifically chose two folk tunes. They're both Bhangra beat yes. tunes. Yes. You could have chosen to perform pop because you have enough pop songs as well. Why was it important to choose Bhangra and folk music as the music you put on that platform? क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी जाते रहते हैं आर्टिस्ट जो पॉप गाते ही हैं, तो मेरे को था कि चलो अभी मौका मिला है इस स्टेज पे, और इस स्टेज पे जो हमारी बीट है, जो हमारा म्यूज़िक है, अगर वो मैं कर जाऊँ तो बड़ी बात है। बाकी वैसा सा सेम सा म्यूज़िक तो वीकेंड भी परफॉर्म कर रहा होगा वहाँ पे, और बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा म्यूज़िक तो ये है, और मेरी इच्छा भी ये है कि अगर मेरा कोई बहुत बड़ा गाना इंटरनेशनली हिट हो तो वो पंजाबी से जुड़ा हुआ हो, उसकी बीट पंजाबी हो, ढोल हो उसमें। ये मेरी इच्छा है। पता नहीं क्या हिट हो जाएगा, आप बनाते रहते हो काम, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर कुछ ऐसा क्रॉस ओवर हुआ तो वो पंजाबी म्यूज़िक से होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो फिर वो उन्हीं की बीट है, उन्हीं की वैसा सा ही म्यूज़िक है, उसका हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका म्यूज़िक है जो लोगों से कनेक्ट होता है वो सारे डिफरेंट जॉनर्स हैं, और मुझे पता है कि यू वेरी गुड एट स्पॉटिंग what music is going to identify with people. You keep across trends, you keep across people's listening habits. At what point do you just start making music for yourself and not for what will do well? You know, because there's a difference. There's a difference between making music for the consumption of others and making music that fulfills your soul. हर एल्बम में एक गाना तो अपनी मर्जी का होता है। लाइक केस लास्ट एल्बम में मेरी अपनी मर्जी का गाना था, वाइब वो मेरी अपनी मर्जी का गाना था। ये मैं हूँ। लवर ये ऐसे गाने मैं नहीं। इवन नैना इज नॉट दिलजीत। It's a great song, No, though. it's a great song, 100%. It's a great song. It's a great song and great composition, and राजपा जी ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो मैं हूँ नहीं। मैं एक्टर तो मैं कर सकता हूँ सारा कुछ। आई एम लाइक आगे पगा पूछ में देसी गाय, यू नो। You know, Diljit, I'm so happy क्योंकि मुझे आज लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं। जब से हमने अपना लास्ट इंटरव्यू किया था, मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस दिलजीत को मैं जानता था 10 साल पहले, 11 साल पहले, वो दिलजीत मुझे शायद उन इंटरव्यूज़ में नज़र नहीं आता, और वो आदमी मेरे सामने आज बैठा हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एक वो आप बदले नहीं। शायद जितने भी आप मशहूर हो गए हैं, जितने भी बड़े हो गए हैं, और मुझे पता है कि लोग मुझे कहेंगे इस इंटरव्यू में कि तुम बहुत ही तारीफ़ें कर रहे हो, लेकिन आप बदले नहीं। और ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द ना बदलना सबसे मुश्किल काम है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है बंदे की नहीं बदलती, वैसे बदलना अच्छी चीज़ है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। Basically, your foundation. बदलाव जो है वो बहुत अच्छा है, हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो ठहराव आएगा, तो आप फिर जकड़ जाओगे उस चीज़ में। बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी, जैसे फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, थैंक यू। तो फाउंडेशन कुछ ऐसी हैं, वारिशां ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पूरियां जी। कुछ आदत जो आपकी होती है, चाहे आपको विजडम भी आ जाए, चाहे ज्ञान भी आ जाए आपको, चाहे ऊपर से आ रहा हो आपको ज्ञान, अब वैसे आता सब यही है, आप जस्ट आपको वेसल अपना खाली रखना है। क्रिएटिविटी भी मुझे लगता है कि आप, अगर आपका वेसल जो है वो भरा हुआ है, तो वो क्रिएटिविटी तो फ्लो हो रही है, वो आपके वेसल में नहीं आएगी, किसी और में आ जाएगी। तो अगर बंदा सोचता है कि मैंने लिखा, मैंने गाया, या मैंने ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये गलत है। ये जस्ट क्रिएटिविटी जस्ट फ्लो कर रही है,
जस्ट आपका वेसल जो है वो खाली होना चाहिए. You understand what I'm saying? I understand completely. But you should also celebrate when you've killed it. And your look at the Met Gala was incredible. I knew it. I knew it. जब मैं जाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा. चाहे वो मुझे कम दिखाए, लेकिन जब मैं जाऊंगा कोई नहीं देखेगा. ये मेरे को day one से पता था. अभी भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे को, अगर मैं यहाँ गया ना तो देखना कोई नहीं देखेगा. How did you know? I don't know. I'm so sure. I don't know. Did you manifest the Met Gala? Did you think about it? Did you know it? Was it even on I don't know the proper meaning of manifest. जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, Yeah. इसका भी मतलब मुझे पूरा नहीं पता. मैनिफेस्ट मतलब ऐसा बैठ के सोचना होता है कि अब मैं ये करूँगा. कुछ लोग ऐसे, मैं रील्स देखी है कि दिलजीत शीशे आगे खड़े होकर बोलता था कि तू ऐसे करेगा, तू अब ऐसा नहीं है. आपको जस्ट काम करना है और अपने आप में बिलीव करना है. अगर मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा तो वो बेसिक्स है, वो आपको करना ही है मेहनत, राइट. सो ऐसा नहीं कि मैं कुछ बैठ के सोचने लग जाता हूँ कि अभी मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे होगा. ऐसे नहीं, आपको काम करते रहना है और आपको करना है कि हाँ यार ये मैं कर दूंगा. But you could have looked iconic without the Gurmukhi on your back. You could have looked iconic without the Kirpan in your 100%. hand. You could have looked iconic, 101%. but you chose to look iconic 101%. with those things. या मेरे को पहले से पता था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं राजा लगूंगा. ये मेरे सोच पहले से थी. मैं जब कार्टियर के शोरूम में गया लास्ट टाइम तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को वो हार दोगे जो राजा का था. वो हमारा ही था, आप लोग लेके चले गए सब. और बहुत सारे हार हैं, इधर भी तो पड़ा है लंदन में एक जो दे नहीं रहे. तो उन्होंने तब प्रॉमिस किया था, लेकिन शायद वो किसी, वो क्या होती है अंग्रेजी में जो लगती है, एग्जीबिशन में पड़ा था तो वो स्टक हो गया. At the V&A. या तो लेकिन मैंने वैसा सामने बनवा लिया था. और जब ये मेरे दिमाग में, मैं वैनिटी में सरदार जी शूट कर रहा था, जब मेरे दिमाग में आया कि मेरी ड्रेस होगी, उसके पीछे पंजाब का मैप होगा और गुरमुखी लिखी होगी, तो मैं रो दिया था तभी मतलब ये थॉट जब आया मुझे, मैं तभी रो दिया था कि यार मैं जा रहा हूँ विद माई पंजाबी लैंग्वेज. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा थॉट था. मेरा वहाँ जाना इतना कोई ज़रूरी नहीं था. पंजाबी वहाँ जा रही है और टर्बन वहाँ जा रही, मैं रो दिया था इस चीज़ के लिए ऑलरेडी. और मेरे को पता था कि जब ये उस कारपेट पे जाएगी ये सबसे बड़ी होनी चाहिए. पंजाबी लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है ये, और इसका ड्यू है. सॉरी. तो मेरे को पता था ये इसमें एक स्टोरी है, एक कहानी है. दिलजीत नहीं जा रहा, पंजाब जा रहा है. फॉरगेट अबाउट मी. तो मैं तभी रो दिया था अपनी वैनिटी में कि यार वाह, अगर ये हो गया. उसके बाद उन्होंने बोला आप कृपान नहीं लेके जा सकते. मैं यार मेरी लुक नहीं बनेगी कृपान के बिना. कहते नहीं आप लेके नहीं जा सकते. मैं ओके. देन मैं कहा फ़ोटो करा लूँ, मतलब बैक स्टेज फ़ोटो करा लूँ. तो दे सर यस आप करवा लो, बैक स्टेज करवा लो. तो मैं बैक स्टेज फ़ोटो करवा रहा था, तो उन्होंने बोला निकलो लेट हो गए. तो मैं ऐसे ही लेके बैठ गया कृपान गाड़ी में. तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप बाहर किसी को पकड़ा देना, कारपेट पे आप कृपान नहीं लेके जा सकते, आप ये हथियार वेपन हो गया. ओके नहीं लेके जा सकते, ठीक है. फिर मैं उतरा, मुझे लगा नहीं यार अगर कोई मांगेगा तो दे दूंगा, बड़ा दिल दुखेगा, लेकिन ये मेरी लुक है. तो मेरे आगे थी शकीरा की ड्रेस पे ना वो पीछे मेटल लगा हुआ था बहुत सारा, मतलब पिन्स लगे हुए थे बहुत सारे, और कोई भी बाकी उसके पीछे नहीं जाना चाहता था. शी इज़ अ बिग स्टार, राइट. तो वो फिर वो हो जाता है कि एक बड़ा स्टार जा रहा है तो पीछे वालों को फुटेज कम मिलती है, तो कोई उसके पीछे जाने को तैयार नहीं था. मेरे ग्रुप में तो वही थी. तो मैं सोचा इट्स ओके यार, अब ये है इतनी दूर आए तो आए, इट्स ओके. तो मेरे को जब वो उसमें से निकल रही थी, जहाँ डिटेक्टर क्या होता है वो मेटल डिटेक्टर, तो उसके इतने मेटल डिटेक्टर थे, वो टू उसका बोलना ही था. तो मेरे हाथ में कृपान थी. You snuck in? ना, तो मैं उसके साथ ही चला गया. तो मैं उसके साथ ही चला गया. तो अगर पकड़े गए तो दोनों पकड़े जाएंगे, नहीं तो नहीं. तो वो मेरे, क्योंकि वो केप था तो वो कृपान उसके अंदर थी. तो उन्होंने शकीरा को चेक किया, मुझे चेक ही नहीं किया. Very good. Wow. story. उन्होंने मुझे चेक नहीं किया. They said, oh yeah, you go. तो वो चेक उसको करने लगे. फिर हम खड़े हो गए. देन मैं जब गया वहाँ पे, मैं तो पूरे रात ही कृपान घुमाई गया उसे. एंड थैंक्स टू प्रियंका चोपड़ा, मैं वहाँ गया तो वो वहाँ पे थे ऑलरेडी. एंड मैं जब अपने टेबल पे गया, एक सरदार लड़का भी था वहाँ पे, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था और मैं अकेला था. मैं अकेला बहुत देर से कहीं गया नहीं, किसी शादी में नहीं गया, किसी पार्टी में नहीं गया. तो मैं जो टेबल मेरा था वो उसका टेबल नहीं था, लेकिन वो मेरे पास आया, पाजी आपको चाय पानी जो चाहिए मैं दूंगा. तो वो
एक सरदार बंदा देख के मुझे और खुशी हुई, वो वहाँ पे सर्व कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बहुत हेल्प की। वो पाजी जो भी थे उनका बहुत बहुत थैंक यू। एंड देन प्रियंका चोपड़ा वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला, दिलजीत मैं इधर ही बैठी हूँ, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई और अगर कोई भी चीज़ तेरे को चाहिए होगी जस्ट से पीसी और मैं जल्दी से आ जाऊँगी। सो अपने बंदे जहाँ होते हैं सपोर्ट करते हैं, तो मेरा तब भी मन भर आया था। और तब और एक बहुत प्यारी बात थी कि मैंने कभी उनको नहीं सुना था लाइफ में, मेरी गलती, कॉल स्टीवी वंडर। Stevie Wonder, wow. या तो स्टीवी वंडर की परफॉर्मेंस थी, पहले अशर ने परफॉर्म किया, देन स्टीवी वंडर ने परफॉर्म किया। तो जब वो गा रहे थे स्टीवी वंडर, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान गा रहा है। तो मैं वहाँ भी रो दिया, मतलब मेरे को लगा था भगवान गा रहा है उस बिल्डिंग के अंदर, आज भगवान गा रहा है। म्यूजिक इज एवरीथिंग। साउंड बहुत बड़ी है। सो सॉरी। दिलजीत, मुझे पता है ये सब बोल के आप काफ़ी इमोशनल होते हैं जब आप ये सारी चीज़ें बोलते हैं, और मैं आपको कुछ मिनट पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब आपने कहा था ये आप सब पंजाब के लिए कर रहे हैं, और सच में आप सब कुछ पंजाब के लिए कर रहे हैं। जब से आपने शुरुआत में भी जब आप गा रहे थे तब भी आप पंजाब के लिए कर रहे थे, जब आपने फिल्में शुरू की आपने पंजाब 1984 की, उड़ता पंजाब की, अब पंजाब 95 जो अभी आने वाली है वो भी, ये सारी फिल्में आप पंजाब, अमर सिंह चमकीला, या सब पंजाब के लिए कर रहे हैं। पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है, लेकिन मैं ऐसा नहीं पाजी कहना चाहता कि मैं पंजाब के लिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद हो रहा है। ऐसे इसको ऐसे ऐसे फ्रेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं पंजाबी आगे हुए, जैसे आप कहते मैं हूँ हैं पंजाबी, क्या बोलूँ, मैं हूँ पंजाब, ये जो सारी जो चीज़ें आप कहते हैं, आप कम्युनिटी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नीरू के बच्चे हैं वो स्कूल में जाके प्राउडली कह सकें मैं भी पंजाबी हूँ। आप सब के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग फिर भी आपको नीचे पुल करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में, हैं मुझे नहीं अनफॉर्चुनेटली हैं। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जितने बड़े आदमी आप बनते हैं उतने ज़्यादा लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपका सक्सेस शायद बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है वो लोग नहीं हैं, मुझे लगता है हम सब भगवान हैं। भगवान के बिना आप ऐसे सोच सकते हो कि दुनिया मतलब ये हम चला रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। सांस भी नहीं ले रहे, अपनी मर्जी से हम सांस रोक भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। हवा भी वहीं चल रही होती है, बंदा भी वहीं होता है। क्या चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है अंदर से? तो मैं देखता हूँ हर इंसान में वही है। आप ही का जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। अगर कोई मेरे को हेट कर रहा है, शायद मेरे अंदर अभी हेट बाकी है जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ है ऐसा जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मुझे अभी ठीक करना है। मेरे को लगता है वो लोग नहीं हैं जिनको आप लोग बोल रहे हैं, वो लोग नहीं हैं। दे आर जस्ट मिनियंस जो आपको चेक कर रहे हैं। हम मिनियंस, राइट? ये हमारा सब टेस्ट चल रहा है। आपने ये कहा है कि वो लोग इंसान नहीं हैं, या आपको नहीं, इंसान मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा नहीं, लेकिन वो मिनियंस हैं। मैं समझ गया, वो मिनियंस हैं। नहीं, मैं सबको, हम सबको ही ऐसे बोल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पे इंसान हूँ और वो मिनियंस है। ऐसे नहीं, मेरे कहने का मतलब है, चल जो बनाना बना लो। मेरे कहने का मतलब है कि उनका कसूर नहीं है। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है तो वो उसका कसूर नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। जब जो आपको बोला, जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है अगर, और मैं आपको वो बोलता हूँ सिर्फ आपके रिएक्शन के लिए। मेरे को नहीं पता मैंने जो आपको बोला है वो मेरे थॉट्स नहीं हैं। जो मेरे को बुरा बोल रहा है वो उसका थॉट नहीं है वो। But you know, when you're doing so much for a community, and Neeru, I'd love your perspective on this as well. When you're doing so much for a community and you're taking that community to a level that it's never been showcased on before, and you're putting them on a platform that they've never been seen before, and you're doing it with sincerity and you're doing it with integrity, when people still try pulling you down, sometimes you really just want to say, fuck off. Like, honestly, sometimes you really just ये want तो to ठीक है, say, चलो कोई नहीं, एक गाला गुला तो बंदा काट ही लेता बड़ मुठियां। sometimes you just want to say, like, piss off. I'm just doing the best I can. I'm doing it for you. Shut up. Everybody has a. नहीं, मुझे लगता है भाई कोई बंदा किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, हर बंदा अपने लिए कर रहा है। कोई बंदा किसी के लिए नहीं कर रहा, हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। अपना लिए काम करते करते कुछ चीज़ें हो जाए वो अलग बात है। मैं थोड़ी किसी लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वेरी सेल्फिश गाय। I just think he's got a level of patience that most people don't. See, no, I mean, okay, there comes a point in everyone's life when you want to say,
fuck you. You do. I want to say it. I want to say it today. A lot of things I want to say. But this is the beauty, right? This is a gift that we have. It's our choice. We know when to control ourselves, when to lash out. I mean, that's human. And if you know how to control that, I think that's a great asset. But everybody has a boiling point. Absolutely. I go in the washroom and I'll say, oh, fuck you, fuck you, fuck you. And breathe, and then I'm like, Wow, okay. what a content, yeah? What a content, That's yeah? it. What do Start we do? with this conversation. Start with this clip. Fuck you, fuck you, fuck you. Oh, There comes a point. Start with this clip. shit. No, you see, No. Cut mine. look at how old we are. We've gone Oh. through life. Like I was just thinking this morning. I think I'm so fed up of pretending that I would love to one day just sit and say everything the way it is. But then no, मैं थोड़ी अपनी नीरू बाजा. ते सरदार जी रिलीज हो रही है जून 27 सारों ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार. You know, आपने मुझे 5 साल पहले कहा था, I'm not desperate. I never want to look desperate. I never want to come across as though I'm desperate. And when I see you and you're in a van with Shakira, or you're making a video with Will Smith, or you're on stage with Ed Sheeran, you never look desperate. And what I mean by that is you always know your worth. And sometimes it's hard to know your worth when you're in a room where you've never been represented before. It's hard to know that you are worth something when people around you tell you Will Smith's such a big guy, or He's a big guy. he is a big guy, but Diljit, in your own way, you are a big guy and you know your worth. How do you get that sort of confidence and self-belief in yourself? Because I think that's one of the things that inspires most people. I think we are same. Our guru said Pai. Pai means brother. We all brother and sisters. I don't feel like he's obviously Will Smith is a big star. Ed Sheeran is a big star. और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं वो, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टार हैं. Ed is like amazing artist, right? And I never thought in my life कि मैं उसके साथ कभी गाना गाऊंगा. मैं तो उसके गाने सुने तो मैं उसका गाना गा भी नहीं सकता जैसे वो गाने गाते हैं. और ये भी नहीं पता था मुझे कि वो कभी मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे. और उसके पास फ़ोन भी नहीं है, वो सिर्फ ईमेल पे बात करते हैं. तो उन्होंने जब मैंने उनके साथ बॉम्बे शो किया था तो उन्होंने मुझे ईमेल की थी थैंक यू के लिए कि जस्ट थैंक यू सो मच तुम आए ब्ला ब्ला, है ना. और मैं जब यहाँ यूके शो पे आया मैंने भी एक ईमेल की कि मैं यहाँ आया हूँ, अगर आप फ्री हैं तो आइएगा ज़रूर. तो उन्होंने बोला कि हाँ कल मेरी बेटी का स्कूल है, मुझे सुबह छोड़ना है, लेकिन मैं रात को तेरे शो पे आ जाऊँगा बर्मिंघम. He came to Birmingham. That's a big deal और as well. इसमें कोई लेबल इन्वॉल्व नहीं था, कोई मैनेज ऐसा बंदा इन्वॉल्व नहीं था. इट्स जस्ट एक ईमेल उसने की थी, एक ईमेल मैंने की, और वो एक ईमेल पे आया वहाँ पे उसको, और कोई डिमांड नहीं थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ब्ला ब्ला. दिस एंड वेरी डाउन टू अर्थ गाय. I think he went for a curry before the concert. He went to Asha Bhosle's restaurant in Birmingham, and then he came straight to the concert. And he chose that Birmingham. वो चाहते थे कि मैं बर्मिंघम आऊँ. मैंने उनको बोला था कि मैं लंदन हूँ, आप लंदन रहते हैं शायद यहाँ पे, तो आप लंदन आ जाएंगे. नहीं, मैं सबसे देसी कौन सा है बर्मिंघम में, वहाँ पे आऊँगा. आपको एक बहुत ही कम उम्र में grow up होना पड़ा. Like from a young age, you had to be more grown up than you actually were. Sometimes when I see you on social media, I wonder if you're living out the childhood you never had as an adult. When you're drinking the most expensive coffee in London, when you're bouncing from wall to wall in the corridors of a concert venue, are you living out the childhood you never had? आई थिंक वो मरना ही नहीं चाहिए आपके अंदर. अगर आपके अंदर का बच्चा मर गया तो आप किसी चीज़ के लिए भी एक्साइटेड नहीं होगे. और आर्टिस्ट के अंदर का बच्चा तो कभी नहीं मरना चाहिए. तभी आपको नई फिल्म की भूख होगी, तभी नई म्यूज़िक की भूख होगी, नए काम की भूख होगी. बच्चा तो आपके अंदर मरना ही नहीं चाहिए. आप बच्चे के साथ ही मर जाओ जिस दिन मर जाओ आपके अंदर जो है. अगर आपका बच्चा मर गया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी. वो आपके अंदर जो है एक बचपना, वो नहीं कभी भी मरना चाहिए. लेकिन जो बचपना आपको नहीं मिला, वो आप अब जी रहे हैं. नहीं, मैं तो तब भी मज़े में था, अब भी मज़े में हूँ, और मैं मज़े में ही जाऊँगा. हाँ, तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ मैं ऐसा अपना बचपन नहीं जी पाया. मेरी कोई सैड स्टोरी नहीं है. एक्चुअली मैं इतना खुश हूँ कि आपने ऐसे बोला है, क्योंकि मैं थक गया हूँ ये पॉडकास्ट देख के जिनमें वो पूछे जाते हैं कि कोई ना कोई दुख भरी कहानी नहीं, मेरी सुनाओ, कोई दुख भरी और कहानी आपकी है ही नहीं. नहीं, मेरी कोई दुख भरी कहानी नहीं है. Life is beautiful. या 100%. आज सुबह बहुत अच्छी बात की, कांग पाजी मेरे साथ होते हैं. आज कुछ बात चल रही थी
तो वो खाना खा रहे थे, उन्होंने इतनी प्यारी बात की। मतलब कई बार आपको कुदरत रिकॉल करती है किसी के थ्रू, और उसको भी बंदे को नहीं पता होता कि कुदरत आपके साथ बात कर रही है उस बंदे के थ्रू, और उसको खुद को नहीं पता होता। उन्होंने इतनी प्यारी बात की, हम खाना खा रहे थे, वो कहते हम जिंदा है ना, इससे बड़ी बात नहीं है। Very true. We actually complicate life. We complicate it. ये बहुत Just बड़ी you बात said- like you said, him and Ed Sheeran, just two guys. They decided to play together and sing together. That's how they see it. Everyone else complicates life. It's really very simple. मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा था कि लोगों को शायद ये एहसास नहीं है कि we've met many times over the years. We've done many interviews. You were kind enough. You invited me to Australia. You invited me to New York. We weren't unfortunately able to do that. Come Australia this time. We are doing show with the, I think in October maybe. Yeah, October, November. I'm ready. I'll come. Come. Thank you. Thank you. I'd love to come. But the reason I say that is because you have a lot of fans that have developed in the last 5 or 6 years. They do not know the Diljit pre-GOAT. They don't know the Diljit pre-GOAT. They don't even know the Patiala Peg and Panch Tara Diljit. And there was a whole Diljit before that Diljit as well. Whose Diljit are you? Because the new fans, they claim you. They say you are theirs. The ones from Vibe and Lover and Clash and Case, they say you're theirs. You have the back to basics Diljit fans who are like, you're theirs, the Karkus and the Radios and the Strawberries, you're theirs. And then you have the way back Diljit fans as well. Whose Diljit are you? मैं तो भाई इतना मैं तो नहीं सोचता जितना ये लोग सोचे। There's forums about it, there's pages about it. You there's- confused it all. See, keep it simple. He's everyone's Diljit. Whose Diljit are you? वेरी टफ क्वेश्चन भाई। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा भाई। 100% after 2020 I'm a new guy, 101%. Like if they saw me like A side, this is different side, 100%. After 2020 I'm a different guy. But I don't know about as in music career wise. I'm just trying. I love music, that's it. And I'm so blessed कि मैं म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए म्यूज़िक सब कुछ है, और मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, हर तरह का जॉनर सुनता हूँ, हर नया आर्टिस्ट मैं सुनता हूँ, किसी भी जॉनर में हो, चाहे वो कोरिया में हिट हो रहा हो, चाहे वो कोई लैटिन म्यूज़िक में हिट हो रहा हो, कोई भी आर्टिस्ट किसी भी जॉनर में अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है यार ये मेरे से बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इस एज में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। जैसे एक आर्टिस्ट मैंने कुछ 3-4 महीने हुए डिस्कवर किया है, मैं अगर नाम गलत ना ले जाऊँ, अंग्रेजी मेरी गलत है ना, ये बेंसन बून क्या आर्टिस्ट है, कितना प्यारा वो परफॉर्म करता है, कितने प्यारे उसके गाने हैं। मुझे लगता है कि इस स्टेज में मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं मिस कर गया। और लोग बोलते हैं कि यार ये गाना अच्छा था, ये गाना अच्छा था। मुझे लगता है नहीं यार, मैं मिस कर गया, इतना अच्छा मुझे ये करना चाहिए था। वो हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ज़्यादा म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, शायद इतना प्यारा लग रहा है, शायद मेरे में कोई कमी है। तो मैं तो हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, और मैं म्यूज़िक ही करते रहना चाहता हूँ बस। Wow. Well, on that note, the music of this movie is great as well. I think the fact that we're talking about all of these other things, the fan following that you've built are coming to Sardar G3 because of a combination of things. They're coming because of you two together. They're coming because of the way you're releasing the film. They're coming because of your star presence as your global star presence as well. So 27th of June is when the film is out. What would you like to say to audiences about the movie? Lady first. I just want to say I love you all, and I hope you enjoy the film. Yes. आप किसी के बोलने से फिल्म देखने नहीं जाता। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है, आप देखें, एंजॉय करें, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी देखें, कोई टेंशन नहीं। Diljit, Niru, thank you so much for your time today. Thank you.